annexure. This year, I've made a provision of 1.48 lakh rupees pursuit of Vikasit Bharat. In line with the strategy set out in the interim budget, this budget envisages sustained efforts on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. Number 1, productivity and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3, inclusive human resource development and social justice. 4, manufacturing and services. 5, urban development. 6, energy security. 7, infrastructure. 8, innovation, research and development. And 9, next generation reforms. Subsequent budgets will build on these and add more priorities and actions. A more detailed formulation will be part of the economic policy framework about which I will speak later in this speech. This budget details some of the specific actions to be initiated in the current year towards fulfillment of these priorities with potential for transformative changes. The budget also covers some of the previously made announcements with intent to strengthen them and step up their implementation for expediting our journey towards the goal of Vikasit Bharat. Priority 1, productivity and resilience in agriculture. Transforming agricultural research. Our government will undertake a comprehensive review of the agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate resilient varieties. Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. Missions for pulses and oilseeds. For achieving self-sufficiency in pulses and oilseeds, we will strengthen their production, storage, and marketing. As announced in the interim budget, a strategy is being put in place to achieve Atmanirbharta for oilseeds such as mustard, groundnut, sesame, soybean, and sunflower. Vegetable production and supply chains. Large-scale clusters for vegetable production will be developed closer to major consumption centers. We will promote farmer-producer organizations, cooperatives, and startups for vegetable supply chains, including for collection and storage and marketing. Digital public infrastructure for agriculture. Buoyed by the success of the pilot project, our government, in partnership with the states, will facilitate the implementation of the digital public infrastructure in agriculture for coverage of farmers and their lands in 3 years. For Kharif, using the DPI will be taken up in 400 districts. The details of 6 crore farmers and their lands
will be brought into the farmer and land registries. Further, the issuance of Jan Samarth-based Kisan credit cards will be enabled in 5 states. Shrimp production and export. Financial support for setting up a network of nucleus breeding centers for shrimp brood stocks will be provided. Financing for shrimp farming, processing, and export will be facilitated through NABARD. National Cooperation Policy. Our government will bring out a national cooperation policy for systematic, orderly, and all-round development of the cooperative sector, fast-tracking growth of rural economy and generation of employment opportunities on a large scale will be the policy goal. This year, I have made a provision of 1.52 lakh crore rupees for agriculture and allied sectors. Priority 2, employment and skilling. Employment-linked incentive. Our government will implement following 3 schemes for employment-linked incentive as part of the Prime Minister's incentive के लिए हम 3 schemes में खास तौर पर focus करेंगे. The EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees and employers. Scheme A, Pehli scheme. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. किसी भी फॉर्मल क्षेत्र में दाखिल होने वाले लोगों को जो पहली बार नौकरी पा रहे हैं उन्हें 1 महीने की तनख्वाह दी जाएगी. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. 210 लाख युवाओं को इसका फायदा मिलेगा. 1 लाख तक की तनख्वाह पाने वाले जो पहली बार नौकरी करेंगे उन्हें 50,000 रुपए तक का इंसेंटिव दिया जाएगा पहले महीने में जो EPFO में रजिस्टर्ड होंगे. In the manufacturing sector linked to the employment of first-time employees. An incentive will be provided at specified scale directly both to the employee and the employer with respect to the EPFO contribution in the first 4 years of employment. The scheme is expected to benefit 30 lakh youth entering employment and their employers. हमारी दूसरी स्कीम 30 लाख युवाओं और उनको रोजगार देने वाली कंपनी और लोगों को फायदा पहुंचाएगी. Support to employers. This employer focus scheme will cover additional employment in all sectors. All additional employment within a salary of 1 lakh rupee per month will be counted. The government will reimburse to employers up to 3,000 rupees per month for 2 years towards the EPFO contribution for each additional employee. The scheme is expected तीसरी हमारी स्कीम रोजगार देने वाले लोगों को फायदा पहुंचाएगी. 50 lakh persons. 3,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत दिए जाएंगे हर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए. यानी जैसे जैसे उनके पास लोग बढ़ेंगे उसी हिसाब से सरकार कंपनियों को और लोगों को एम्प्लॉयर्स को फायदा पहुंचाएगी. Working women hostels in collaboration with industry and establishing creches. In addition, the partnership will seek to organize women-specific skilling programs and promotion of market access for women. महिलाओं के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे, क्रेच बनाए जाएंगे, इंडस्ट्री के साथ सहयोग बढ़ाकर इन्हें बनाया जाएगा और बनाया जाएगा. साथ ही महिलाओं पर केंद्रित और महिलाओं के रोजगार पर केंद्रित स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स को भी फोकस में रखा जाएगा और उनको बढ़ावा दिया जाएगा.
with state governments and industry. 20 lakh youth will be skilled over a 5-year period. 20 लाख युवाओं को स्किल रोजगार से जोड़ा जाएगा, स्किल दिया जाएगा अगले 5 साल के दौरान। 1,000 industrial training institutes 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड किया जाएगा। orientation. Course content and design will be aligned to the skill needs of industry, and new courses will be introduced for emerging needs. Skilling loans इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से कोर्स को अपग्रेड किया जाएगा will be revised और उसी हिसाब से लोगों को स्किल देने की कोशिश की जाएगी 5 lakh rupees with a उन इंस्टीट्यूट्स के जरिए जहां पर स्किल डेवलपमेंट पर केंद्रित This measure कोर्स is चलाए जा रहे हैं। to help 25,000 students every year. इससे 25,000 छात्रों को हर साल फायदा मिलेगा। Education loans for helping our youth who have not been eligible for any benefit under government schemes and policies. हमारे वो छात्र जिन्हें सरकार की किसी भी स्कीम के तहत फायदा नहीं मिल रहा है या उसके लिए वो योग्य नहीं है, Higher education in domestic institutions. घरेलू इंस्टीट्यूशंस में दाखिला लेने के लिए उन्हें एजुकेशनल लोन देने का सरकार प्रावधान करेगी और उनको इसके जरिए फायदा पहुंचाएगी। E-vouchers for this purpose. E-vouchers for this purpose will be given directly to 1 lakh students every year. हर साल 1 लाख subvention छात्रों को ई वाउचर्स के जरिए ये पैसा दिया जाएगा। amount. जो लोन वो लेंगे उस पर ई वाउचर्स के जरिए हर साल लगभग 1 लाख छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। Saturation approach. Our government is committed to all-round, all-pervasive, and all-inclusive development of people, particularly farmers, youth, women, and the poor. For achieving social justice comprehensively, the गरीब, saturation किसान, approach महिला और of युवाओं covering all का चौतरफा eligible विकास people हो, through हमारे various सरकार का programs, केंद्र में यही योजनाएं including हैं। those for education and health, will be adopted to empower them by improving their capabilities. Implementation of schemes शिक्षा और meant स्वास्थ्य for के जरिए supporting economic गरीब, महिला, युवाओं और किसानों को फायदा पहुंचाया जाएगा। self-help groups, scheduled caste, scheduled tribe, and women entrepreneurs and street vendors such as the PM Vishwakarma, PM Swanidhi, National Livelihood Missions, and Stand Up India will be stepped up. Purvodaya. The states in the eastern part of the स्टैंड country अप इंडिया, स्टार्टअप are इंडिया rich in endowments महिला and एंटरप्रेन्योर्स have द्वारा strong cultural जो traditions. रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार Formulate कदम a उठा रही है। plan SC, ST, Purvodaya स्ट्रीट वेंडर्स, for इनके लिए जो सरकार ने all-round- कदम for उठाए the हैं उनके रोजगार all-round को बढ़ाने के लिए development उसमें of the और ज्यादा eastern सरकार region of the country, योगदान करेगी और covering उसको और Bihar, बढ़ाएगी, उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. On the Amritsar-Kolkata industrial corridor, we will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas B, Virasat B in a growth trajectory. We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna Purnia Expressway, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, Bodh Gaya, Rajgir, बोध गया और राजगीर और वैशाली और दरभंगा एक्सप्रेसवे। additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar
at a total cost of बक्सर में एक और 26,000 एडिशनल crore rupees. 2-लेन ब्रिज बनाया जाएगा। कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा Power projects, ये खास कदम including उठाए setting जाएंगे। up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, 21,200 करोड़ रुपए खर्च कर 2,400 मेगावाट का एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक द्वारा और एडिशनल सहयोग और सपोर्ट मिले बिहार सरकार को, ये सरकार की मांग थी। इसको बढ़ावा दिया जाएगा और इसमें अहम कदम उठाए जाएंगे। Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, आंध्र प्रदेश की जरूरत को भी सरकार समझती है। recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. हम अलग-अलग current financial year, 15,000 crore rupees सोर्सेज के जरिए आंध्र प्रदेश की अतिरिक्त पूंजी की मांग को समझते हुए सहयोग करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में भी और आगे आने वाले सालों में भी। सरकार समझती है कि आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त पूंजी की जरूरत है। to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. Under the Act, Andhra Pradesh Reorganization Act, for आंध्र प्रदेश industrial development, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर provided for essential infrastructure, आंध्र प्रदेश में power, डेवलपमेंट के लिए एडिशनल फंड्स मुहैया कराए जाएंगे ताकि आंध्र प्रदेश का विकास तेजी से हो। विशाखापट्टनम चेन्नई कॉरिडोर पर भी और ज्यादा जोर दिया जाएगा। industrial corridor, हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी एडिशनल एलोकेशन दिया जाएगा towards capital investment for economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए Backward regions of वृद्धि के लिए Rayalaseema, अतिरिक्त Prakasham, पूंजी दी जाएगी North-Coastal आंध्र Andhra, प्रदेश को। as stated in the act, will be provided. PM आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आंध्र प्रदेश को 3 crore ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए अतिरिक्त under the PM फंड्स मुहैया कराए Awas जाएंगे। Yojana in rural and urban areas in the country will have been announced, for which the necessary allocations are being made. Women-led development. For महिलाओं के promoting से women-led आधारित development, the budget ग्रोथ carries an और विकास allocation of more than 3 lakh crore for 3 लाख schemes करोड़ benefiting women and girls. का सरकार ने प्रावधान किया है महिला आधारित This विकास signals our government's पर केंद्रित commitment for अलग-अलग स्कीम्स के लिए। women's role in economic development. Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan, प्रधानमंत्री for जनजातीय improving उन्नत the ग्राम प्रधान socio-economic condition of tribal communities, we will launch the Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan by adopting saturation coverage for tribal families in tribal majority villages and aspirational districts. आदिवासी बाहुल गांवों में This will cover 63,000 सरकार villages इस स्कीम को लागू benefiting करेगी। 5 crore tribal people. 5 करोड़ Bank branches in आदिवासी northeastern region. परिवारों और गांवों को इसका More फायदा than मिलेगा। 100 branches of India Post Payment Bank will be set up 100 in the से ज्यादा northeast इंडिया region पोस्ट to expand the banking service. पेमेंट बैंक ब्रांचेस
नॉर्थ ईस्ट में This खोली जाएंगी। I have made a provision of 2.66 lakh crore rupees for rural development, including rural. इस साल हमने 2.66 लाख करोड़ का Priority 4, फंड एलोकेट किया है manufacturing and services support ग्राम विकास के लिए। of MSMEs. This budget provides special attention to MSMEs and manufacturing, particularly in एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और सपोर्ट करने के लिए सरकार ने अलग से एक पैकेज का प्रावधान रखा है। and technology support for MSMEs to help them also compete globally, as mentioned in the interim budget. I'm happy to announce the following specific measures. एमएसएमई के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। Guarantee